Bismillahirrahmanirrahim. My name is Maman Fail. I'm assistant professor at University of Similar Campus Badin, and presently I'm talking to you from the platform of the Paragon Academy Badin. This is a third session of our online English language class. In my previous sessions, I had already mentioned it that given to the unprecedented circumstances, we all are confined within home, and our schools, colleges, universities, they are shut. In that situation, hundreds and thousands of students who are sitting at home and their academic process is halted. Therefore, we designed to go for these online classes. So I am very much thankful to you all for your response, for your cooperation, and also for your interest. Okay. And please do share with your friends and fellows, because we want to reach a large number of students, not in Badin or Sindh, but across Pakistan. Actual purpose of this class is only that we should benefit a large number of students, and especially also we should help some of the teachers who need the basics of that language teaching. Apart from that, we should utilize this technology and the available time for the positive mean. Okay. So thank you very much. And those who have joined me, kindly just inform me that if you are listening me properly, if everything is going well, so that we could proceed further. Thank you, Mr. Noordin. Thank you, Mr. Ayaskul. Yes, thank you. Thank you, Ms. Nayab. Everything is well. Thank you very much. Okay. So now let us proceed. Okay. We in our previous classes we talked about that what is a language and why we want to learn this language. Thank you, Ayaz. Ayaz, thank you very much. We wanted to learn this this language basically whatever the language we want to learn, actually the main purpose of that language is to communicate. आपका मकसद है कि उस ज़बान में आप अपनी बात को communicate कर सकें, लोगों से share कर सकें. That is the prime purpose. Okay. So you may share your ideas and feeling and questions and problems and whatever things you want to share with your fellows. That is where we begin with this. चाहते हैं जो आप अपनी बातें, अपने सवाल, अपने आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशन, that is what is language is for. Okay. Then we move forward that whenever we talk about these languages, okay, they are designed for certain purposes, and as they go together, we have to move with them. Okay. This was our first session. Okay. That we talked about that language is basically just a collection of sounds, and all the languages what we are using, जो भी languages हम use करें, they are designed for communication. Okay, communication का यहाँ पे मतलब है कि आप उसमें राब्ता कर सकें. And then we have also discussed that we have two types of languages, maybe language of sounds and language of gestures. जो साउंड्स की लैंग्वेजेस हैं, जितने भी साउंड्स हमारे बनते हैं, वी गो विद दिस टाइप ऑफ अ थिंग, एंड दे आर कनेक्टेड विद मे बी सिंधी, पंजाबी, पश्तो, एसेट्रा. दीज ऑल लैंग्वेजेस, they are the languages of sound, and they are directly connected with this sound system. So here whatever the language we are learning, जो ज़बान हम भी यहाँ पे सीख रहे हैं, basically English is also language of sound like Sindhi, Punjabi, Pashto. So we are learning here this language. Basically this is also a language of sound,
एंड दैट इज आवर टारगेट। ओके, अब आते हैं कि वी इन नेक्स्ट क्लास भी, प्रीवियस क्लास वी कवर दैट कोई भी ज़बान सीखें तो उसके 4 होते हैं। वेन एवर यू आर गोइंग टू लर्न, जब भी आप सीख रहे हैं अ न्यू लैंग्वेज, ओके, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, यू मस्ट 4 स्किल्स पे फोकस करें। दे आर लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। जो इनपुट है, जाहिर बात है जब आपको इनपुट मिलेगी तो आउटपुट आएगी। इनपुट इज अ आउटपुट। ओके, अगर इनपुट नहीं होगी तो देयर इज नो चांस ऑफ आउटपुट। ओके, एंड इनपुट वी हैव अ लिसनिंग एंड रीडिंग। ओके, आपके पास 2 तरह की इनपुट है। अ लिसनिंग इज योर इनपुट स्किल, ओके, एंड रीडिंग इज योर इनपुट स्किल्स। ओके, अब देखिए आपने अपनी मदर टंग कैसे सीखी है। दैट इज यू लर्नड योर मदर टंग, आपने अपनी जो मादरी ज़बान सीखी थी, यू लर्नड इट विद हेल्प ऑफ लिसनिंग। ओके, when you were born, जब आप पैदा हुए, you were using that certain language, your parents they were using certain language, वो एक कोई मखसूस language use कर रहे थे, you started listening them, आप उनको सुन रहे थे, and slowly gradually you started to speak, but when you came to speak it took you 5 6 3 years, sometimes some years। ओके, यू दैट वाज अ फेज। ओके, 3 साल तक वो इनपुट चलती रही थी, लेकिन आपने फिर उस पर बोलना शुरू किया। एंड व्हेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग, दैट वाज नॉट अ परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दैट वाज नॉट अ परफेक्ट लैंग्वेज। ओके, और जो आपने शुरुआत की थी वो आपने वर्ड से की थी। यू डिडंट से मामा गिव मी वाटर, बट यू यूज्ड अ सिंगल वर्ड वाटर। ओके, और मज़े वाली बात है कि लैंग्वेज प्रोसेस में भी जो शुरुआत हुई थी वो वर्ब से नहीं हुई है, वर्ब से नहीं। बच्चा ये नहीं कहता है उठा कर दो, वो कहेगा खिलौना। मीन्स बाकी जो एक्शन है वो हम समझते हैं खिलौना उठा कर दो। जब उसको पानी चाहिए होता है तो बच्चा ये नहीं कहेगा गिव मी वाटर, पानी दें या पिलाएं, वो सिर्फ पानी वर्ड यूज़ करेगा। मीन्स लैंग्वेज इवन इन अ नेचुरल प्रोसेस वी बिगिन विद द नाउन। ओके, लैंग्वेजेस की जो शुरुआत होती है वो हम अक्सर बच्चे नाउन से शुरू करते हैं। सो लिसनिंग का बड़ा रोल था आपकी लैंग्वेज में, एंड यू गिव मच इम्पोर्टेंस टू योर लिसनिंग। देन देयर कम्स अ रीडिंग, देन आउटकम इन योर आउटपुट स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा अपनी जो राय है दैट लिसनिंग इज अ मच वेटेज। आई हैव गिवन इन 20/80 रेशो। इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई हतमी है या कोई है, लेकिन कम पेश इससे मेरा मुराद ये है कि ये 80% देकर आपको कि प्लीज़ लिसनिंग इज़ अ की टू लर्निंग लैंग्वेज। लिसन अ लॉट अ लॉट अ लॉट अ लॉट। लिसनिंग इज़ अ की टू लैंग्वेज लर्निंग। ओके, सो लिसनिंग का बड़ा रोल होता है। ये इसलिए मैं बार बार इस पर एम्फेसाइज करता हूँ, बिकॉज इन आवर सिस्टम, teaching system, language teaching system, okay, we ignore that, and it is not that much incorporated even in a classrooms. So the students they are listening, they are L1, वो जो सुन रहे होते हैं वो अपनी ज़बानें सुन रहे होते हैं, और जो बोल रहे होते हैं, जो रीड कर रहे होते हैं वो अंग्रेज़ी रीड करते हैं, और जब टीचर उसको एक्सप्लेन करता है उर्दू सिंधी में तो वो सुनते हैं अपनी ज़बानें। So listening, then we have to reading and speaking and writing, these were the skills, and I have given much focus. आप सोच रहे होंगे कि बार बार सर इस चीज़ को रिपीट करा, बट बिकॉज वाई दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, देयरफॉर आई गिव इट मच टाइम। ओके, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट दिस L1 एंड L2। ओके, L1 से हमारी मुराद ये होती है कि योर लैंग्वेज। ओके, L1 ओके, जो भी आपकी मदर टंग है और जो आप ज़बान सीखना चाहते हैं, दैट्स योर L2। ओके, सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2? ये वाज़ेह होना चाहिए कि L1 आपकी अपनी ज़बान है जो आपने घर पे सीखी थी, और जो आपने घर पे सीखी थी you covered 2 skills at home. Okay, your listening and speaking, it was covered at home. Okay, you didn't need anything for your listening and speaking, because it was already you have already learned it at your home. And later on when you went to the reading and the writing session, that reading and writing you needed school. Okay, उसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ा। तो जो लैंग्वेज 1 है, जो आपकी अपनी मदर टंग है, उसको सीखने में आपने 2 स्किल ऑलरेडी घर पे सीख लिए, 2 स्किल आपने जाकर स्कूल पे सीखे। अगर आप में से कोई भी साथी स्कूल नहीं गया तो उसको रीडिंग राइटिंग, उर्दू या सिंधी की रीडिंग राइटिंग नहीं आती होगी, लेकिन अगर वो सिंधी सोसाइटी में रहता है तो उसको सिंधी लिसनिंग स्पीकिंग आती है, और अगर वो
उर्दू कम्युनिटी में रहता है तो उसको उर्दू लिसनिंग स्पीकिंग आती होगी, लेकिन जब रीडिंग राइटिंग की बात आती होगी देन ही विल गेट अ प्रॉब्लम. ओके, सो दैट वाज इन द केस ऑफ L1. ओके, बट व्हेन वी कम टू L2, ओके, now there is a main point. ओके, what is L2? L2 means whatever language you want to learn. ओके, जो भी आप एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर आप सीखना चाह रहे हैं, दैट विल टर्न टू बिकम योर L2. ओके, अब जब आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, आज अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि यू वांट टू लर्न जर्मन, आप जर्मन सीखना चाहते हैं, देन यू दैट जर्मन इज L2 फॉर यू. इफ़ यू वांट टू लर्न रशियन, दैट रशियन इज L2 फॉर यू. इफ़ यू वांट टू लर्न जापानीज और चाइनीज, इवन जो हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, दैट इज समहाउ दैट इज आल्सो L2 फॉर अस. तो अब L2 में क्या करना चाहिए, हमें उसमें चारों स्किल्स को फोकस करना चाहिए. हमारे स्कूल क्या करते हैं, हमारे स्कूल शुरू से हमारे पाकिस्तान के अंदर L1 और L2 टीचिंग का जो बेसिक डिफरेंस है उसको फॉलो नहीं किया जाता. इसके लिए क्या होता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हमारे पास पैदा होते हैं, दे आर वेरी गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि उनको इस तरह सिंधी और उर्दू पढ़ाई जाती है. वही मैथडोलॉजी, वही पैडागॉजी, वही टेक्निक, अलफ बे पढ़ाओ, फिर वर्ड्स पढ़ाओ, फिर सबक में ले जाओ, क्वेश्चन आंसर डिक्टेशन, यही प्रोसेस. और यही चीज़ सिंधी में भी वही पढ़ा रहे होते हैं, अंग्रेज़ी में भी वही लेसन रीडिंग क्वेश्चन आंसर. तो क्योंकि सिंधी उर्दू में हमारा फोकस बच्चे की रीडिंग राइटिंग इम्प्रूव करना होता है, उसको लिसनिंग स्पीकिंग तो ऑलरेडी घर पे आती है, लेकिन अंग्रेज़ी में ये होता है कि हम बच्चे में सिर्फ रीडिंग राइटिंग के स्किल तो किस हद तक पैदा कर लेते हैं, लेकिन जो लिसनिंग स्पीकिंग है वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाती है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में आज तक कभी भी लिसनिंग स्पीकिंग का सेशन ही नहीं हुए. So that is a real challenge. Okay, and here this is the very paradigm shift what we need at our school levels, and especially the teachers, जो teachers मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गो फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेशंस इन योर क्लासरूम, जिसमें सिर्फ बच्चे को स्पीकिंग करनी हो, नॉट एट ऑल कोई और उसमें चीज़ आप इन्वॉल्व न करें. जस्ट आस्क देम टू इन्वॉल्व देम इन स्पीकिंग सेशन. इसमें यह होता है कि अक्सर तौर पे हम स्पीकिंग के लिए ये होता है कि हम एक प्रेजेंटेशन का तरीका रखते हैं. प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें अगर 60 या 50 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो एक बच्चा आकर बोल रहा है, बाकी जो बच्चे हैं वो बैठे हैं, तो उसको सिर्फ बोलने का पूरी क्लास में या 2 घंटे में सिर्फ 3 या 4 मिनट मिलते हैं. तो दैट इज़ नॉट दैट मच साउंड. हाँ, ये जब हम उनके फाइनल स्किल को डेमॉन्स्ट्रेट करवाना चाहते हैं, देन वी कम टू द प्रेजेंटेशन लेवल. बट इफ़ ये स्पीकिंग सेशन आप 2 बच्चों का ग्रुप बनाएं, 3 का बनाएं, 4 का बनाएं, उन चारों को कहें कि आपस में उस कोई भी एक टॉपिक आप पहले डिस्कस करें, फिर उसको बोलें, उस पर बात करें. उसमें यह होगा कि उस बच्चे को कम से कम 25, 30, 40 मिनट बोलने का मौका मिलेगा उस 1 घंटे की क्लास में. दैट विल वर्क. ओके, so just speaking for 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, okay, that's not a solution. Okay, so we have to focus these all 4 skills. अब पिछले दिनों कुछ सेशन में सवाल आया कि सर हाउ कैन वी जस्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग. जिस तरह मैंने कहा, नाउ इट इज़ यू ऑल आर सिटिंग एट योर होम, confined, and you can start speaking with your family members. आप अपने घर वालों से बात करें या घर के मेंबर्स से बात करें, अगर उसमें वो साथी दे आर एजुकेटेड, या अपने बहन भाई हैं, यू शुड स्पीक विद दैम. अगर कुछ भी नहीं है तो देन यू हैव एन अदर ऑप्शन व्हाट वी कॉल सेल्फ कॉन्वर्सेशन. ओके, खुद से बातें करना. तो दैट इज़ नॉट, फिर कुछ साथी ने कहा कि लोग कहेंगे कि ये पागल है या फलाएँ, तो प्लीज़ डोंट टेक दीज थिंग्स. ओके, मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि जब आप अपने जहन में इस तरह की बातें पहले से डाल देंगे ना, देन दीज थिंग्स विल क्रिएट ए काइंड ऑफ इनहिबिशन, और ये आपके लिए एक रुकावटें पैदा करेंगी. सो व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स दैट. ओके, बी ऑनेस्ट एंड बी कमिटेड एंड बी पॉजिटिव. डोंट थिंक इन दैट सेंस के लोग क्या कहेंगे. लोगों को तो बस कहना ही है, वो कहते हैं ना दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. तो डोंट केयर अबाउट दीज पीपल. ओके, व्हाट दे आर सेइंग. ओके, व्हाट शुड वी केयर अबाउट, वी शुड केयर अबाउट व्हाट इज़ द लर्निंग. तो सेल्फ कॉन्वर्सेशन क्या होती है, आप खुद से बातें करें, आप उसी टॉपिक पे आप अपने आप से बात करें कि आई लिव इन Aberdeen and we have many challenges in Aberdeen, and I am planning to get quality education. For that I have to select ideal institutes where I could find teacher with a wonderful teaching pedagogy and with
proper academic qualification. So begin with that with the short things. And आज मैं आपको बताऊंगा 7 सीक्रेट्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज ओके, जे होप्स के वो 7 सीक्रेट्स को हमने किस तरीके से फॉलो करना है. सो दैट इज़ वे वी कुड बिगिन ओके. आप जो है ना वो उनसे जो है ना वो बात करें कि जो आपस में, अच्छा अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है और फिर आप जो है ना वो सेल्फ टॉक जो है ना सॉफ्टवेयर आता है, अगर आप उसको टॉक को अपने फ़ोन में जो है ना इंस्टॉल कर लें तो यू कैन आल्सो टॉक टू इट ओके, एंड यू कैन रिकॉर्ड and you can listen to it okay, and you can find out that what mistakes you are doing, and also you can help out and you can share with certain expert or certain some teachers to help you out कि आप जो बोल रहे हैं whether it is correct, what type of mistakes are there, कौन सी वहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, like that. So with the help of this thing you can also practice this speaking session at your home okay. So now moving forward okay, now today that when we say that we want to learn language okay, हमें अंग्रेजी सीखनी है for example, तो अक्सर सवाल तो हमें क्या करना चाहिए ना, क्या सीखना चाहिए या उसके लिए क्या करना चाहिए. अब पिछले दिनों कुछ साथियों ने कहा था कि सर हम कोर्स की तरफ जाएं. यस एग्जैक्टली, अब हम कोर्स की तरफ ही जा रहे हैं. तो पहला आपने क्या करना है कि लैंग्वेज सीखने के लिए फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू ओके, यू नीड ए सेमांटिक्स ओके. व्हाट इज दिस सेमांटिक्स ओके, यू नीड वर्ड्स एंड मीनिंग ओके. अल्फाज जो होते हैं उनको इकट्ठा करना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ओके. एंड वेयर फ्राम यू कैन कलेक्ट दिस वोकेबलरी. ये वोकेबलरी आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे? येस डेफिनेटली फ्राम योर बुक्स, फ्राम योर लिसनिंग मटीरियल, फ्राम योर where whatever the source may it be television, may it be radio, may it be internet, may it be computer, may it be cell phone, wherever okay you find words okay, and you know the words and their meanings okay. अब इसमें एक इशू ये होता है कि जिस तरीके से आमतौर पे हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रही है टीचिंग में, वो ये एक हो रही है कि हमने आमतौर पे स्कूल्स में वर्ड्स और मीनिंग याद करवाई जाती है ना, अकेले वर्ड्स ओके. तो ये चीज़ जो है दैट्स नॉट ए गुड ओके. यू शुड नॉट गो विद दिस वर्ड्स एंड मीनिंग ओके. कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सिर्फ वर्ड्स को याद करना शुरू कर देते हैं कि सर मैंने 500 वर्ड्स याद कर दिए, 600 वर्ड्स याद कर दिए. इट्स ओनली सिंगल वर्ड्स ओके, आइसोलेटेड वर्ड्स को याद करना जो है ना वो इसलिए फ़ायदेमंद नहीं होता है दैट आफ्टर 1 month or 2 months or 3 months you forget those words. आप वो वर्ड्स भूल जाते हो, फिर नए वर्ड्स याद करते हो, पुराने वर्ड्स भूल जाते हो. इस तरह नहीं होता. आप देखें हमारी टीचिंग के अंदर इवन हमें जब पढ़ाया गया था तो एक अदर वर्ड्स की कापी जो है ना वो लिखवाई जाती थी जिसमें वर्ड और मीनिंग लिखवाई जाती थी, और पता नहीं क्लास 4, 5, 6 से लेकर फर्स्ट तक मैट्रिक तक हमने वो कापी बनाई और उसमें वर्ड्स मीनिंग लिखे. बट अब अगर देखा जाए तो फिर वो वर्ड्स जो है ना वो किसी काम के नहीं रहे. होता ये वर्ड्स वो है, वोकैब वो है जिसको आप इस्तेमाल करते हो. बाकी खाली जो वर्ड्स आप याद कर रहे हो उसका आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा. डोंट डू दिस थिंग ओके. तो इसमें छोटे छोटे फ्रेजेस किस तरह फ्रेजेस होती हैं. सपोज गिव मी पेन, वेयर इज योर बुक, कैन आई पिक योर कॉपी, इज ही योर टीचर, प्लीज़ गिव मी वाटर. इस तरह के छोटे छोटे जो ना. अब जब आपने इस वाटर को अपने सेंटेंस में एक मरतबा यूज़ कर लिया उसके बाद ये वर्ड आपका होगा. याद रखो, आप कितने भी वर्ड्स याद करो लेकिन उसको जब तक आप अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने कंटेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब तक वो आपके काम के नहीं हैं. जिस तरीके से आपने वर्ड्स पढ़ा अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक की आपको वर्ड मीनिंग बता दी गई कि ज़िलज़िला. अब ये ज़िलज़िला जो है वो आपको बस ठीक है अर्थक्वेक ज़िलज़िला ये, लेकिन आपको कभी ज़िंदगी में इस वर्ड को यूज़ करना पड़े तो उसका कुछ जो सेंटेंस है या उसी तरीके से आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि आप सिर्फ आइसोलेटेड वर्ड्स की तरफ जा रहे हो. डोंट गो टू दैट प्रैक्टिस ओके. जस्ट ट्राई यूजिंग दी सेंटेंसेस. वो वर्ड आपके हैं जो आपके इस्तेमाल में हैं. जब तक इन अल्फाज को आप इस्तेमाल नहीं करते हो तब तक ये अल्फाज आपके जो है किसी भी काम के नहीं रहेंगे, और वर्ड्स वो काम के हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हो. सो वो सेमांटिक्स
फर्स्ट थिंग, पहली ज़रूरत जो आपको लैंग्वेज के सीखने के लिए पड़ेगी वो सिमेंटिक्स होगी कि द नंबर ऑफ वोकेबलरी यू हैव एंड the way you use them. So start improving your semantics with the help of uses. And how could you use them? Just by with these simple phrases, simple sentences. This is my class, I'm happy with this system, I have some problem, can I pick your pen? छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर आप उनको जो है ना वो यूज़ करें. देयर इज़ एन अर्थक्वेक इन चिली, कि चिली में ज़िलज़िला आया है. इस तरीके से इफ़ यू वुड स्टार्ट यूजिंग दीज सेंटेंसेस इन अ शॉर्ट फ्रेजेस, इन शॉर्ट सेंटेंसेस, देन दीज वर्ड हेल्पफुल अस. अगर जब आपने एक वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज़ कर दिया, उसके बाद वो वर्ड आपका होगा. बाकी वैसे वर्ड्स और उसकी मीनिंग आप हज़ार याद करते रहें, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी दीज वर्ड्स वुड नॉट बी ऑफ योर हेल्प. ये आपको मदद नहीं कर पाएंगे एंड दे विल नॉट बी दैट मच हेल्पफुल. ओके, सो नंबर 1 सेमेंटिक्स. ओके, कलेक्ट वर्ड्स का जो भी आपके सोर्सेज हैं. और देखिए ना, वैसे नॉर्मल अंग्रेज़ी बोलने के लिए हमें कोई ऐसे नहीं कोई 5000 या जो कोई इतने कोई ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है. आप देखें नॉर्मल जो स्पीकिंग के लिए 700 800 1000 वर्ड्स की पे जो है ना वो एक बंदा नॉर्मल लैंग्वेज वो यूज़ कर सकता है. और बच्चा जो नॉर्मल बोलता है सिंधी उर्दू, उसकी भी यही सेमेंटिक्स होती है. इसके बदले आप देखें कि आप जब स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो 4 5 6 से आप अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू कर दें. वहाँ से अगर आप वर्ड्स को काउंट करें तो फर्स्ट ईयर इंटर तक अगर नॉर्मल एक मैंने कहा था पैसेज के अंदर जो ना 100 से 200 से 250 वर्ड्स होते हैं, और एक नॉर्मल जो हम यूनिट पढ़ते हैं उसमें 400 500 वर्ड्स होते हैं. एक किताब में तकरीबन 18 से 20 हज़ार तक वर्ड्स की जो है ना वो कॉम्बिनेशन होती है. तो 3 4 5 से लेकर इंटरमीडिएट तक अगर हम इन तमाम वर्ड्स को इकट्ठा करें जो आपने इंग्लिश में, फिज़िक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में वर्ड्स पढ़े, तो ये जाकर बनते हैं कोई 20 लाख 22 लाख तक हमारे पास पहुंच जाते हैं. लेकिन उसका अलमिया ये है कि इतना कुछ मौजूद हमारे पास इतने जो है ना वो हमारे पल्लों में नहीं रहते कि हम जो जस्ट उनको जो ना अवेलेबल हो जिसको हम ज़रूरत के टाइम इस्तेमाल कर सकें. सो यू कैन इमेजिन दैट व्हाट टाइप ऑफ दिस इज़ अ फियास्को, दैट्स अ फेलियर ऑफ आवर लर्निंग सिस्टम. ओके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ओके, सो ये एक एक्चुअली हमारा जो है ना इस पूरी लर्निंग का एक इशू बन चुका है जिसको हमें जो है वो कवर करना है. तो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ semantics, and the more you give time to your semantics, okay, the better you understand, okay, your communication process, your learning process, it gets well. Okay, so after this semantics, okay, the second thing, देखें और भी लैंग्वेजेस के अंदर वो चीज़ें आती हैं जब हम लिंग्विस्टिक साइड पे जाकर उनकी स्टडी करते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं आपको किसी क्या कहें कि कम्प्लेक्स फेज़ में नहीं डालना चाहता. मैं इसमें सिंपल एरियाज़ आपको बताकर और आपके को चाहूँगा कि आप एक लैंग्वेज यूज़र बने और लैंग्वेज को सही यूज़ करना सीखें. तो आफ्टर सेमेंटिक्स द सेकंड पॉइंट दैट इज़ अ फोनेटिक्स. ओके, फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स इज मीन्स प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स. ओके, अल्फाज को कैसे प्रोनाउंस करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब देखें जब आपके पास सेमेंटिक्स तो आ जाती है, आपके पास वोकैब वर्ड्स हैं, लेकिन द वे यू प्रोनाउंस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वो बड़ा मैटर करता है. क्योंकि आप जब, मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग क्वींस इंग्लिश एट्सेट्रा, लेकिन मेरा मतलब ये है कि एटलीस्ट आपकी जो तलफ़्फ़ुज़ है वो अप टू द मार्क होना चाहिए. क्योंकि नेचुरल है कि आप की जो अपनी लैंग्वेज है L1 जो है, जो अपनी लैंग्वेज है वो जो है वो आपकी L2 पे असरअंदाज होगी. जब कोई भी साथी सिंधी से पहली मरतबा उर्दू में हैं तो आपने देखा होगा कि वो कैब उर्दू की यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनका तलफ़्फ़ुज़ जो होता है वो सिंधी की तरह होता है. एक्सेंट सिंधी का यूज़ करते हैं, वो कैब जो है वो उर्दू की यूज़ करते हैं कि बाबा हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है मगर क्या करें, दैट इज़ वे. ओके, इसी तरीके से हमारे इवन जो हमारे साथी पश्तो स्पीकिंग है वो भी जब उर्दू में बात करते हैं तो देखें वो पश्तो वो कैब को
अपने जो है ना वो पश्तो एक्सेंट में बात कर रहे होते हैं, तो उनसे पता चलता है कि ये साथी जो बात कर रहा है इसकी लैंग्वेज 1 L1 जो है वो पश्तो है, जो उसी के L2 जो उर्दू पे असरअंदाज हो रही है। तो दैट इज़ ए नेचुरल। होता क्या है कि आपके जो वोकल आर्गन है, वोकल आर्गन्स आगे चल के मैं आज डिस्कस करूँगा। वोकल आर्गन्स वो हैं जिससे ये आवाज़ साउंड्स पैदा होती है। तो अब ये जो साउंड बनाने वाले वोकल आर्गन्स हैं वो पहले किस लैंग्वेज के लिए ट्यून होते हैं? यकीनन जो आपकी अपनी ज़बान होती है, सिंधी, उर्दू, पश्तो, तो क्या चूँकि वो उन साउंड्स के लिए ट्यून हो जाते हैं, उसके लिए जब आप उसके बाद जब आप दूसरी लैंग्वेजेस में जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो साउंड्स हैं दे आर ट्यून फॉर दैट L1 जो उसके लिए ट्यून हो चुके होते हैं, देन दे स्टार्ट uttering the sounds of L2 with the same accent। तो वो क्या करते हैं, उसी अपनी L1 का जो साउंड पैटर्न है उसी साउंड के साथ हम L2 को भी बोलना शुरू कर देते हैं, जिस हमारा जो तलफ़्ज़ है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सर आई हैव कम फ्राम बदीन, बदीन इज़ अ वेरी मच डाउन ट्रॉडन एरिया, people are very poor. Now see, if you are speaking with such accent, what are you doing? You are using the vocabulary from English language words, but the sound pattern, accent pattern, the way you are going to pronounce here, the Sindhi accent is going to dominate the English sound. So is the case with our Punjabi brothers. They speak with that Punjabi accent and Pashto accent and Sindhi accent, okay? तो दैट इज़ नेचुरल। ये कुदरती बात है कि आपके अपना जो एक्सेंट है वो उस पर असरअंदाज होता है। लेकिन करना क्या है, व्हाट वी नीड टू डू हेयर, क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू ओवरकम दिस फियास्को। हमें इस फियास्को को, इस दिक्कत को, इस प्रीडिकमेंट को, इस मुश्किलात को ओवरकम करना है। और हमने जो अंग्रेज़ी बोलनी है वो कम से कम इट मस्ट बी अप टू द मार्क, ओके। वो इस तक हो कि आप जब बात करें दैट इट शुड बी understandable and it should be up to the standard, so the people could listen to you, they could enjoy your sessions, and this will also give a kind of a positive credit and also credentials to your portfolio, okay। और ज़्यादा तौर पे जब आप जॉब पे जाते हैं, इंटरव्यूज़ में जाते हैं, मार्केट्स में होते हैं, प्रेजेंटेशंस में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, किसी फोरम पे बात करते हैं, किसी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या फोरम पे आप बात कर रहे हो, दीज थिंग्स मैटर अ लॉट, ओके। सो द सेकंड थिंग व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर प्रोनाउंसिएशन, द वे यू प्रोनाउंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब इसमें करना क्या है, इसमें चंद एक वो बेसिक साउंड्स हैं जो मैं समझता हूँ अगर हम उनको कंट्रोल करें तो वी कुड जस्ट इम्प्रूव दीज वेरी बेसिक्स, ओके, जो कॉमनली हमारे यहाँ जो है मिसप्रोनाउंस होते हैं या जहाँ से हमारी लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें हुई हैं। सो नाउ लुक एट दैट द फर्स्ट, ओके, जनरली पीपल का व्हेन वी टीच स्टूडेंट्स वी से ABCD, okay। This A, that is where from we just deviate, okay, and this shouldn't be pronounced as A, we should pronounce it I, and if you will pronounce it I, then you will not say day, it will be day, you won't say say, pay, okay, alay, amay. Now look that with this basic sound what we have just uttered as A, then we say it day, but it should be day. So it is not I, day, say, my, pay, lay. You can change, okay. So with the improvement of this one basic sound, you can improve many words, okay, and this will be very positive change in your language, okay. So then the second we often call it this what the people say O, yes, but this should be pronounced as O. And when you say go and no and so, actually this area is purely with the phonetics, okay, and इसका बेहतर जो हल वो phonetics की स्टडीज़ है वो भी इतनी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसके phonetic जो ट्रांसक्रिप्शन के साइंस एंड सिंबल हैं वो जब हम पढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स को तो ये और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे ये कोर्स जो है वो मैं बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स तक ले जाना चाहता हूँ तो उसको अभी उस phonetic
से इसके बजाय मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चंद कुछ बेसिक साउंड जिनको वो अगर बेहतर करें तो उनके लैंग्वेज के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है. तो एट दैट लेवल डोंट प्रोनाउंस इट ओ, टीचेस देम ओ, गो, डोंट से गो, नो, डोंट से नो, सो, एंड इवन डोंट से इट इज़ लो. हटा के एल ओ डब्ल्यू को हम क्या पढ़ते हैं, लो. हटा कि लो जो है वो LAWL जिसको हम कानून कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसको ला पढ़ा जाता है. दैट इज़ नॉट ला, दैट इज़ लो. एंड SAW को हम सा पढ़ते आए, दैट इज़ नॉट सा, दिस इज़ सो. एंड इवन यू कैन जस्ट आई कैन वेरीफाई इट with the help of there is Oxford Dictionary, okay. We can use it, Oxford Dictionary, for better pronunciation, okay. And you can see that even Oxford Dictionary also pronounces it as a not law, but this is low, okay. This should be low and so, and we can also just use that as well, okay. Let it open. We are going to Oxford, okay. Yeah. Now here you can see that this is low. Okay. There is a bit technical problem. We are not going to. The speaker is not going to connect because they are connected. Okay. So well, because the speaker is connected to Bluetooth. Okay. So it is having a problem. But well, I will continue without help of this dictionary. Okay. So let us go with this. This is don't pronounce it as a O. Call it that is low, and call it so. It is not la. It is not sa. Okay. So that's again highly mispronounced words. Okay. What we say la and sa. Call it low, low, and so. But that what we say go. Call it go, no, so. And in later sessions बाद में जो होंगे, I will also speak on that phonetics and sign, उस पर मैं बात करूँगा ताकि आप डायरेक्ट डिक्शनरी में जाकर आप जो है ना वो देख सकें कि जो है ना ये डिक्शनरी में इनको कैसे जो है. अब देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है साउंड्स, ओके, दिस ट्रांसक्रिप्शंस, ओके. ये जो किसी भी डिक्शनरी के अंदर मौजूद जो स्पेलिंग है ये उसकी पिक्चर है, लेकिन ये उसका साउंड नहीं है. हम हमेशा एक गलती करते आए हैं कि हम स्पेलिंग से साउंड बनाने की कोशिश करते हैं. ये नहीं होना चाहिए. ये स्पेलिंग उसकी तस्वीर है. ये जो दी जाती है यहाँ पे उसका साउंड जो है, जो ऑडियो जो है वो यहाँ पे मौजूद है. तो हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि देखिए जब आप टॉक लिखते हैं तो उसके अंदर आप TAL के लिखते हैं, लेकिन जब आप उसको प्रोनाउंस करते हैं तो आप एल को नहीं प्रोनाउंस करते. वो आपको कहाँ पे पता चला कि आप देखेंगे कि उसकी तस्वीर के अंदर एल मौजूद होगा, लेकिन जब आप उसके ट्रांसक्रिप्शन में जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो है ना वो अवेलेबल नहीं है. इसके लिए मैं एक एक्सक्लूसिव सेशन कंडक्ट करूँगा थ्रू जूम, उसको रिकॉर्ड करके, क्योंकि यहाँ पे अब इतना ज़्यादा स्लाइड्स विजिबल नहीं होती, तो उसके थ्रू मैं रिकॉर्ड करके आपको बताऊँगा कि हाउ यू कैन cover this area of this spelling, and that will be purely connected with this area. Okay, तो हमें इस चीज़ को देखना होता है कि when you are going to this pronunciation session, okay, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि pronounce words properly. Okay, तो first I, then O, then P. अच्छा, इसको हम पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं तो ये हो जाता है पिक या पुट. तो इसका जो एक्चुअल साउंड है, जैसे फी, इट्स नॉट अ पे, इट्स फे, फे.
जो हमारे उर्दू साथी हैं, आपको पता है हम फे यूज़ करते हैं। आप जब फूल लिखते हैं ना तो आप फे की साउंड से शुरू करते हैं। सिंधी के अंदर भी हमारे पास ये फे का साउंड मौजूद है। जैसे पान फे फी तो लिखूँगा तो फे, हाँ इनकी जगह पे लिखो पे, जो हम इसको पे लिखते हैं आप उसकी जगह पर प्रोनाउंस करते हैं, उसकी जगह पर इसको सिंपल फी पे रिप्रोड्यूस किया जाए, लाइक पिक, लाइक फैन, लाइक पुट। सो वे यू प्रोनाउंस लाइक पुट, फैन, पिक, प्लीज, pious, part, put, सो फी पर, लेकिन जब आप इसको पे पढ़ते हैं तो वो थोड़ा awkward लगता है, पुट, पिक, like that, okay, so that will not help you to improve your accent, okay, इससे फिर आपके एक्सेंट्स में वो इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रही होती है। तो पहला आपने साउंड को सीखना है ए, ओ, फी, एंड देन देयर इज अनदर साउंड दैट्स वी से खे। अच्छा, ये अक्सर तौर पे हमने के पढ़ा है, तो जब इसको हम के पढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम इससे कह रहे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कहते हैं कि किल, इस के साउंड को हमें खे करके पढ़ना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ के बट अ खे। अगर इसको आप खे पढ़ेंगे तो यू वुड प्रोनाउंस इट किल, काइट, कैन, कैट। देखिए खे की आवाज़ भले सी से निकले या खे से निकले, हमारा वो कंसर्न नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि खे के साउंड को आप के पढ़ना छोड़ दो, इसको ये ना कहो कम। जब आप कम बोलोगे ना तो आपके लैंग्वेज के अंदर वो जो उसके एक्सेंट की ब्यूटी है ना वो नहीं पैदा होगी। आपको कहना चाहिए कम, किल, काइट, कैन। सो ए, ओ, पी, खे, देन कम टी, ओके। देखें ये जो टी का साउंड है इसको भी अक्सर हम टे पढ़ते हैं, हम कहते हैं टुक। अब टे जो है इसको अगर टे की जगह पर इसको आप छे पढ़ें और छे का साउंड फिर मैं वही कहता हूँ उर्दू में भी मौजूद है, और ठोकर जो आप ठे लिखते हैं सिंधी में, तो ठे जो है दैट इज़ अ साउंड जो आपको ये बेनिफिट है कि ये वो जितने भी साउंड है वो आपके वोकल आर्गन प्रोड्यूस करना जानते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। छे मौजूद है, खे मौजूद है, फे मौजूद है, ऐसा नहीं कि ये साउंड मौजूद नहीं है, सिर्फ ये है कि हमने इनको थोड़ा रिप्लेस करना है। तो पी को फी से रिप्लेस कर दें, फिक, फैन, फुट, खे को खे से रिप्लेस कर दें और टी को टी से रिप्लेस कर दें। जो आप कहते हैं टाइम, टे के साथ इसको यू शुड प्रोनाउंस इट टाइम, टे, टाइम। जिसको आप कहते हो टीचर, here you should use टे, teach, teach, teach। ये चे नहीं होता, ये छे होता है। So we should pronounce that as a teach, and took, and tea or a tail, okay। So we would use these sounds like T, and so is the case with che। अब छे को चूँकि हम चे प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरीके से हम कहते हैं कि टीचर, च, सो दिस चे शुड बी रिप्लेस्ड विद छे साउंड, एंड इट शुड बी टीचर रादर देन टीचर। टीचर, टीचर, छे, ये छे, अगेन छे साउंड इज अवेलेबल विद अस, ओके। सो ए, ओ, पी, खे, टी, छे। अगर इन साउंड्स को आप चेंज करें यू विल फाइंड दैट अ वेरी वंडरफुल चेंज इन योर लैंग्वेज। आपके लैंग्वेज में एक बेहतर आपको चेंज महसूस होगा। एंड बेसिक्स, अब ये चीज़ होती क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूँ। क्या होगा, अगर मिसाल के तौर पे आपने बचपन से गो पढ़ा है ना, तो आपके वोकल आर्गन वो गो कहने के आदी हो गए हैं। अब मसला ये है कि ये तब तक गो से गाओ नहीं होगा जब तक आप अपने वोकल आर्गन को रीअलाइन करें। वोकल आर्गन से मेरी मुराद है आपके होंठ, ज़ुबान, दांत, ये सब मिलकर जो ये साउंड बनाते हैं, ये पूरा एक पैटर्न है। अब चूँकि ये काफ़ी सालों से इसको पढ़ रहे हैं, ला ला ला, तो अब इस ला को लो बनाने के लिए आपको इसी वर्ड को
जो है ना 10 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा प्रोनाउंस करना होगा। अब इसका हल क्या है? इसका सिंपल हल ये है कि वो तमाम वर्ड जो आपको महसूस होते हैं कि आप गलत प्रोनाउंस करते थे, आप उनकी लिस्ट बना लें। जब कभी भी आप अकेले बैठे हों, आप अकेले हैं, आप रास्ते पे जा रहे हैं, आप फ्री हैं, आपको कोई काम नहीं है, तो आप 10 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा अगर ये कह दें लो लो लो, सो, फेक, खिल, अगर इस तरीके से आप ये साउंड वर्ड्स कह देंगे तो फिर आपके वोकल ऑर्गन्स क्या होंगे कि वो जो वर्ड बचपन से कहने के आदी हो चुके हैं वो चीज़ उनकी ख़त्म हो जाएगी एंड स्लोली ग्रेजुअली आपके लैंग्वेज के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा एंड दैट विल बी वेरी मच प्रैक्टिकल एंड वेरी मच प्रैग्मेटिक। ओके, सो जस्ट ए, ओ, पी, के, टी, छे, कम टू दिस आ। जहाँ तक ये आ का सिम है अपना जो ना साउंड, तो ब्रिटिश अमेरिकन प्रोनाउंस करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम आर को 3 तरीके से ट्रीट करते हैं। देखिए, अगर कोई भी वर्ड जिसके आखिर में आकर आर पे ख़त्म हो तो वो उस आर को नहीं प्रोनाउंस किया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे ये वर्ड है ना खा, खा, तो हम इसको यही पढ़ेंगे खा, नॉट कार। अगेन देखें, यहाँ पे मैं के नहीं कह रहा हूँ, मैं खे कह रहा हूँ, खा, खा, where is your car? So my car is with my father. अब देखिए father, father, father नहीं, इसमें लास्ट आ को नहीं पढ़ा जाता या उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता ब्रिटिश लैंग्वेज में। टीचर, अब देखिए इसको मैं पढ़ रहा हूँ टी, ठे, टी, छ, छ, चर नहीं और टी नहीं, टे नहीं कह रहा हूँ, ठे, चे नहीं कह रहा हूँ, छे। अब इसके अंदर 3 साउंड्स को हमने चेंज कर दिया। जो नॉर्मल हमारा टीचर था उसको हमने कर दिया टीचर, टीचर। सो खा, टीचर, फादर, 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 फादर का जो लास्ट आ है देखिए हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे। मदर, फादर, मदर, डॉक्टर, टीचर, मैटर, मैटर, ए, आई, आ, जिसे हम हवा बोलते हैं। सिंपल क्या होगा? ए, एफ, आई, आ, फेयर, पी, आई, आ, फेयर। ओके, these sounds, okay, we don't produce this last R in that sense. Okay, so we just use this che and we use this word a, तो आ का पहला रूल, कोई भी वर्ड आज या कोई भी सिलेबल, अब देखें एक वो वर्ड होते हैं जिसमें 2 आवाज़ें होती हैं, 2 सिलेबल होते हैं, उसमें भी अगर पहला सिलेबल अगर इस पे ख़त्म हो रहा है जिसमें आर आ रहा हो, तो अब अगर आप देखें एयरपोर्ट, एयरपोर्ट ये पूरा एक वर्ड है। अब इसमें पहला जो इसमें 2 सिलेबल हैं, इससे मुराद इसमें 2 साउंड है, 2 साउंड है। अब पहला जो सिलेबल है वो है ए। अब ए इसमें देखें ये आर आ रहा है, लेकिन हम इसमें भी इसको नहीं पढ़ेंगे। अब ये मुराद है कि कोई भी वर्ड आ पे ख़त्म हो रहा हो या कोई सिलेबल, सिलेबल से मुराद ये कि एक वर्ड जिसमें एक से ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, अगर वो एक आवाज़ भी अगर आ पे ख़त्म हो रही है तो हम उस आ को प्रोनाउंस नहीं करते। जब हम वर्ड लिखते हैं एयरपोर्ट तो इसमें ए, आई, आ जो आ रहा है इस पे ये एक साउंड ख़त्म हो रहा है, ए। फिर दूसरा जो है वो फोर्ट, FORT, तो उसमें भी जो ना, तो पहला जो रूल आ का ये है कि कोई भी सिलेबल या कोई भी वर्ड अगर आ पे ख़त्म हो रहा है तो आप आ को ना प्रोनाउंस करें। और दूसरा जो इसका रूल है वो ये है कि अगर किसी भी आ के बाद अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो भी हम आर को नहीं पढ़ते। जिस तरीके से देखें बर्ड, अब इस आ के बाद जो है ना वो डी है, डी कॉन्सोनेंट साउंड है। जब कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं तो हम उसको नहीं पढ़ते। हमारे पास ए, आई, ओ, यू, ई, ये जो 5 वाइल साउंड्स हैं इनको छोड़कर बाकी जितने भी साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के ज़ुमरे में आते हैं। तो अगर इनके बाद आ के बाद कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम आ को नहीं पढ़ेंगे। बर्ड, BIRD, गर्ल, GIRL, गर्ल, गर्ल। अब देखिए इसमें आ के बाद एल आ रहा है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जब आप लिखते हैं ना टर्न, TURN,
तो अब इस आ के बाद क्या है, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको टर्न नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे ठन ठन। अच्छा, इसको टी नहीं पढ़ेंगे, ठे पढ़ेंगे, ठन ठन। सो पहला आ का रूल ये कि कोई भी वर्ड या सिलेबल आ पे ख़त्म हो, आप आ को ना पढ़ें। नंबर 2, कोई भी जो है ना वर्ड जिसमें आ के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा हो, जिस तरह बर्ड में आ रहा है आर के बाद डी कॉन्सोनेंट आ रहा है, गर्ल में आर के बाद एल कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो जब कभी भी आ के बाद कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो तो आप आर को ना पढ़ें। और तीसरा जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी आ के बाद वाइल साउंड आ जाता है तो हमें फिर आर को पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से ये आ के बाद यहाँ पे है ना वर्ड क्रीम, क्रीम, देखिए यहाँ पे मैं खे पढ़ रहा हूँ, मैं के नहीं कह रहा हूँ, मैं क्रीम नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्रीम, खे खे, भले सी हो या खे हो, जहाँ पे खे का साउंड निकलता है तो हम इसको के ना पढ़ें, आप इसको पढ़ें खे, क्रीम, and you should pronounce it train, train, T, train, train, okay. So दोबारा इन साउंड्स को रिपीट करते हैं, ए, डे, से, पे, फिर ओ, go, no, so, low, then p, pick, pen, put, then k, kill, kite, can, cat, cook, then tea, time, teach, took, tea, tail, then chair, teacher, chair, chair, don't call it chair, chair, chair। अब देखिए यहाँ पे लास्ट आ को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आर पे वर्ड ख़त्म हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ chair, like that, okay। फिर आर पे आए तो आ का पहला रूल, कोई भी वर्ड आ पे ख़त्म होता है आर को ना पढ़े, लाइक खा, लाइक टीचर, लाइक फादर, मदर, ब्रदर, डॉक्टर। और दूसरा रूल, अगर आ के बाद कॉन्सोनेंट आ जाता है तो अभी आ को ना पढ़े, लाइक बर्ड, गर्ल, एयर, फेयर, ओके। और तीसरा रूल, जब आर के बाद वाइल आ जाता है, जिस तरीके से आर में क्रीम में आ के बाद आ रहा है तो हमें इस आ को पढ़ना होगा, लाइक क्रीम, लाइक ट्रेन, लाइक फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड में भी आर के बाद जो है ना आय आ रहा है तो हमें उसको पढ़ना होता है, वी कॉल इट फ्रेंड, फ्रेंड, हियर वी फाइंड द आर ऑफ लाइक दैट, ओके। सर प्लीज प्रोनाउंस गर्ल, 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 GIRL, girl, don't call it girl, huh? Girl, girl. So that is the basics sounds, okay. They could help you to better pronounce these words, okay. Now let's go to second slide, okay. And after this I and O, okay, and other sounds, okay, that we are often mispronounce, okay, that is say, okay. We call it we say the, TH से अक्सर आपने देखा थे का साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, that should be produced as a say and it should be nothing, thank you, thank you, say। ये हल्का सा से का साउंड होता है rather than थे, जो ना जिस तरीके से हम कहते हैं थैंक यू, तो बेसिकली ये थे नहीं है, दैट इज़ अ बिट से, जो से सवाब से हल्का सा साउंड होता है। ज़बान की सेंटर से, ज़बान की सेंटर के ऊपर जो आपकी जो माउथ की रूफ है या छत है, इससे सॉरी, इससे हल्की ज़बान टच होती है और ये साउंड बनता है व्हाट वी कॉल से, एंड दैट शुड बी नथिंग, दैट शुड बी थैंक यू, थैंक यू, नथिंग, नथिंग, रादर देन थे साउंड, ओके। अच्छा, एक बात तो ये तो जस्ट दैट आई, ओ, पी, के, टी, छे, आ एंड से, ओके। अब कुछ ऐसे साउंड्स की तरफ जाएंगे जो अक्सर जो है ना मिसप्रोनाउंस करते हैं, जिस तरीके से देखें वी, ये जो भी वर्ड आकर LESS पे ख़त्म होते हैं हम इनको प्रोनाउंस करते हैं लेस,
that shouldn't be less, it should be pronounced as less, faithless, faith. अब देखिए यहाँ पे मैं थे नहीं कह रहा हूँ, मैं हल्का सा से का वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, faithless, ओके। हाँ, यहाँ पे यह है कि हाउ टू नो, कामरान ने कहा है कि हाउ टू नो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशंस। यस, एक्चुअली द सिंपल आंसर टू इज दैट, ओके, वी नीड टू लर्न फोनेटिक्स, ओके, हमें फोनेटिक्स सीखनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट आई विल टेक वन एक्सक्लूसिव सेशन ऑन दैट फोनेटिक्स, ओके, क्योंकि ये तो मैं बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को के बेसिक साउंड्स पे कवर करके उनको हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन इसका परमानेंट जो सोल्यूशन है कि वो ये है कि दैट वी मस्ट लर्न फोनेटिक्स, ओके। जो भी आप जब आप डिक्शनरी में जाते हैं, तो कोई भी आप जब डिक्शनरी खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स के नीचे ये जो सिंबल दिए जाते हैं, ये असल में जो है ना उसके सिंबल हैं जो हमें सीखने होते हैं। तो इसको जो है हम इस पे एक एक्सक्लूसिव सेशन हम कंडक्ट करेंगे कि हाउ टू लर्न दिस फोनेटिक्स, ओके, दिस फोनेटिकल सिंबल्स, ओके। तो अगर ये सिंबल्स आपको पता हो तो फिर आप एग्जैक्टली इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। अब आपके सामने ये जो सिंबल टॉक है, इसमें 3 सिंबल यूज़ किए गए, एक है टी और एक है ओ और एक सिंबल है खे, ये 3 सिंबल हैं। अब जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि स्पेलिंग में क्या लिखा हुआ है, हम इधर देखेंगे कौन से सिंबल हैं, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ठी, चूँकि ये टी ओ खे, अब ये प्रोनाउंस होगा ठोक, ठोक, ठोक। ये टाक नहीं है, ये टाक नहीं है, दिस शुड बी प्रोनाउंस एज ठोक। तो अभी वी प्रोनाउंस इट एज ए ठोक, ओके। तो अब अगर आपको ये फोनेटिक में यूज़ होने वाले जो ट्रांसक्रिप्शन के सिंबल हैं, अगर ये सिखा दिए जाते या पढ़ा दिए जाते तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, वी कैन आल्सो कवर इट थ्रू दिस ऑनलाइन क्लासेस एंड दिस इज़ द वेरी एग्जैक्ट इन अ प्रॉपर वे। ये बहुत अच्छा सवाल था कि इसका परमानेंट हल क्या है। येस, इस परमानेंट सोल्यूशन इज दैट वी मस्ट लर्न फोनेटिक्स, ओके। सो थ्रू फोनेटिक्स, ओके, वी कुड कवर दिस एरिया एज वेल, ओके। So then this area what we are talking about, जो वर्ड आकर LESS पे ख़त्म होते हैं, इनको लेस कहने की जगह पर we should pronounce it as a less, okay, faithless, okay, or you should pronounce it as a helpless, okay, rather than helpless, okay, we should pronounce it helpless, okay. So is the case with hopeless, okay. So this ये जो लेस है इसको आप प्रोनाउंस करना छोड़ दें लैंग्वेज में, AOPKT then this less, faithless, helpless, hopeless, okay. Then एक और साउंड जो अक्सर मिसप्रोनाउंस होता है, that comes to the same ENT, okay. And when we pronounce this, okay, when we pronounce this we just pronounce this word like month, that is what अक्सर लोग इससे पढ़ते हैं कि development, okay, agreement, okay, don't call it that meant, pronounce it month, 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 development rather than meant, okay, agreement rather than agreement, there should be agreement, month, arrangement, arrangement, agreement. So month rather than meant, as we say less rather than less, and month. So is the case with goodness. अब ये जो NESS पे ख़त्म होते हैं, हम इसको कहते हैं goodness या badness, okay. इसको आप प्रोड्यूस करें ness, 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 goodness, my badness, ness, not ness, okay. So AOPKT less, month, ness. Then these words there especially end with this ed sort of structures, okay. इसको जिस तरह हम कहते हैं intersted, so don't call it ted, ed, but call it id, intersted, intersted, tit. He is a very wicked, अतः ये wicked है, ये wicked नहीं है. So is the case with the cricket. It is a kit, not kit. ये a नहीं है, it, kit. So is the case with even biscuit, okay? Biscuit, okay, not biscuit, not biscuit. I'm sorry, just for
lighter sense. So biscuit, cricket and wicket and interested, तो प्लीज़ इसको इड पढ़ें या इट पढ़ें तो ये ज़्यादा जो है ना वो वायबल रहता है कि जो ना। अच्छा, फिर एक वो वर्ड की पूरी एक लिस्ट है जो आकर इस जी ई पे या ए जी ई पे ख़त्म होती है। इसको अक्सर जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम इनको तवील करते हैं, लंबा कर देते हैं। जिस तरीके से आपने हम कहते हैं कि मैसेज, इसको सेज ना कहें, इसे सिज कहें, सिज, इज 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 रादर देन एज। मैसेज, मैरिज, कॉलेज, कॉलेज, खे देखिए के नहीं कह रहे, खो, कॉलेज, knowledge, don't pronounce it knowledge, knowledge, village, 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 not village, village, passage, not passage, passage, okay, and advantage, okay, rather than advantage, pronounce it advantage, okay, advantage, and language rather than language, okay। तो ये जो एज वर्ड हम अक्सर पढ़ते हैं, इसको अगर हम इज कहें, मैरिज, मैसेज, कॉलेज, विलेज, नॉलेज, एडवांटेज, लैंग्वेज, that will help you a lot to change your sound, okay। So a, o, p, k, t, t, a, the, lus, mont, nus, interested, message। Now we come to these, this is a list of words, okay। ये वो हैं जहाँ पे हम बी को नहीं प्रोनाउंस करते हैं ना, यहाँ पे बी को नहीं प्रोनाउंस किया जाता है। ये सिंपल होता है बॉम्ब रादर देन, इसको हम बम कहते हैं ना, बट दिस शुड बी बॉम्ब, बॉम्ब। एंड दिस इज ठूम, ठूम, ठूम। मुझे पता नहीं है, ये वर्ड हम गलत तरीके से पढ़ते आए हैं हम सब जो है ना, बट दिस शुड बी ठूम, नॉट टोम्ब जो अक्सर पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, ठूम। एंड दिस इज अ क्लाइम, खे लाइम, क्लाइम, इसमें बी नहीं प्रोनाउंस होता है, क्लाइम, क्लाइम। एंड दिस शुड बी डम, डम, नॉट डम्ब, that's often mispronounced, okay। This should be dumb। and thumb, thumb rather than thumb। and date, doubt, come, come, come। अब देखिए ये वो वर्ड है जिसमें बी को नहीं पढ़ा जाता। अगर इसके हम डिक्शनरी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन वर्ड्स के सामने कहीं भी जो है ना फोनेटिक्स के अंदर जो इसकी ट्रांसक्रिप्शन है उसमें जो है ना वो ये नहीं दिया जाता है। देखिए बॉम्ब, ये सिंपल होगा बैम, ओके। ये देखिए यहाँ पे इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें ये नहीं मौजूद है, इसमें बी का कहीं भी जो है ना आपको नहीं सिंबल मिलेगा। सो विद यू गो इन ए ठूम, दैट विल बी ठूम, ओके, ठूम, ओके, दिस इज ठूम, ओके। हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे डिक्शनरी में जो है ना वो बी का सिंबल तक नहीं, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जाकर देखेंगे यहाँ पे बी नहीं होगा, जो है इसके जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बी का कहीं भी वो साउंड मौजूद नहीं है। यहाँ जिस तरीके से हम कहते हैं क्लाइम, तो इवन इन अ क्लाइम, ओके, यू कैन फाइंड दैट देयर इज नो साइन, climb, okay, there's no sign like a B, okay। So in that sense, okay, these words, they don't carry this sound B, okay, they are simply pronounced as B, so simply pronounced as a bomb and a bomb and tomb and a climb and a drum or thumb, date, doubt या come। अच्छा, फिर एक ये वर्ड हैं जो आकर आते हैं जिस तरीके से फोल, इसको हम फाल पढ़ते हैं, दिस शुड बी ओ, फो, फोल, स्मॉल, ओ, स्मॉल, नॉट स्मॉल, ओके। ठोल, ठोल, नॉट टाल, ओल, नॉट आल, बोल, नॉट बाल, एंड ball, and then there is a call, okay, call is also there, okay, we call it call, okay, call, okay। So yes, let's begin with A, O, P, K, this A, O, P, K, T, T, R, and then there's a faith, there's a fatness, there's development, there's a goodness, there's interested, there's a message, marriage, college, there's a bomb, tune, climb, there's a fall, small, tall, all, and that will be O-U-R. This should be pronounced as R. R, not our, R. A-R-E, this should be pronounced as R. O-U-R या A-R-E, इसके तलफ़ुज़ में कोई फ़र्क नहीं है, both are same, okay।
our school is good, our school is good, okay, या we are going to Karachi, we are going to Karachi, okay, या और जो ओ आर है that should be pronounced as ओ ओ। देखिए ये आर पे ख़त्म हो रहे हैं तो यहाँ पे आर प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, ओ आर को हम कहेंगे ओ ओ। एफ ओ आर को हम पढ़ेंगे फो फो, इसको फार ना पढ़ें फो। एफ ए आर को हम पढ़ेंगे फा फा, वो था एफ ओ आर फो, एफ ए आर फा फो फा फो फा। एफ ए आर एम फार्म फार्म फार्म, एफ ओ आर एम फोम फोम। अब देखें एग्ज़ाम जब होता है तो हम कहते हैं कि एग्ज़ाम फार्म, दैट इज़ इन फार्म, इट शुड बी प्रोनाउंस एज फोम, एग्ज़ाम फोम। जो एग्रीकल्चर ज़मीनें होती हैं दैट इज़ कॉल्ड फार्म, सो फोम फार्म, देन देयर इज़ अ फार्म फार्म, ओके, so farm foam then farm, okay, so foam जो झाग वगैरह होती है like that, okay. Then we have a word we, okay, we should not pronounce it we should pronounce it we. This word cupboard cupboard, okay, what we have been studying cupboard, okay, cupboard, we should put my class in cupboard। और हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है कि जब यहाँ पे अंग्रेज़ रहते थे जाहिर बात है वो ये चीज़ें प्रोनाउंस करते थे कबट, और ये कबट से होता हुआ हमारे पास जो ये वर्ड आ गया है कप बोर्ड, या तो हमने तो उसको अंग्रेज़ी में तो हम कप बोर्ड्स पर प्रोनाउंस करते रहे, लेकिन अक्सर जो है ना वो सिंधी में पाण चवंदा आहियूं तो कपिड़ा कबट में पिया आहिनि। इहो जेको कबट आहे इहो बिगड़ियल फॉर्म आहे, मूंखे लॻे थो त कबट ऐं कबट उन्हीं जो बिगड़ियल फॉर्म कबट मां इन्होंने उनके कबट करे छॾियो। जीअं रिसीट जिस तरीके से वर्ड था जो हमारे पास बिगड़ कर रसीद बन गया है, और कुछ लोग तो रशीद बोलते हैं कि रशीद गायब हो गया है, गायब हो गई है, तो ये जो रसीद है उर्दू की, ये अंग्रेज़ी के ये वर्ड है रिसीट। रिसीट से इसको रिसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रिसीट रिसीट। रिसीट का बिगड़ा हुआ जो है वो शेप है, सो ये जो रसीद है यहीं से रिसीट का बिगड़ा हुआ जो है वो शेप है, तो दिस रिसीट, ओके। एंड कंफर्टेबल कंफर्टेबल, इक्वेशन इक्वेशन, सो लो, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव। अब देखिए यहाँ पे हम फार नहीं पढ़ रहे, मैंने आपको रूल बताया ना कि अगर ओ के बाद कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो हम आर को नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ओ के बाद आर आ रहा है ना तो हम इसको फॉरगिव नहीं पढ़ेंगे, फॉरगिव फॉरगिव, और उसको हम फॉरगेट नहीं पढ़ेंगे, फॉरगेट, एफ ओ आर जी ई टी, फॉरगेट, ओके, सो फॉरगिव फॉरगेट। एंड देन देयर इज अ टेलीफोन टेलीफोन rather than telephone, there's a television rather than television, and there's a theory rather than theory, okay. So these are the basic sounds, okay, what we need to improve this system, your pronunciations, okay. Go back to this session that we started, that what we should do when we want to learn language, okay. So I just simply believe that if you want to learn your language, okay, so what are the essentials, okay. Initially the basic thing what I talked about, that we need semantics, okay, because semantics is very much necessary. If you don't have just a good vocabulary, or means reasonable vocabulary what you need to communicate, then definitely you won't be able to speak properly, to read properly, and even when you would come to write and express, again same issues would be there, okay. So the basic thing which could help you a lot, okay, for your improving system, okay, so that is your semantics, okay. And how could you cover this semantics, okay, where from you can collect this semantics? You could collect from whatever the books you are studying and videos you are watching, okay. What I do, how do I teach my students, okay, when I teach in my class, okay, I have a number of material, okay. We use for example we just watch a particular video in English, then we just write on that video, so we collect the semantics from that videos. Then we have a number of topics, okay. Each day we cover one topic in our class, okay, and in that topic, again these topics are designed for developing vocabulary of the students, okay. So that these topics are not obsolete
are outdated, but I choose topics which are very much related with our practical life and the daily course of affairs, and we start using that vocabulary in this topics, two topics, two videos, two picture writing. We every day we cover one picture, and there is a picture, students are given a keywords, and then students write on that thing. And we will also do some picture writing in this class as well, okay, to give you concept, okay, especially to those who are teachers with me, and to give them concept that how could they build up these things in their classes with their students. So that semantics is very much important, and we should help our students to develop relevant semantics. And then again, even if you go to Oxford Dictionary, okay, you would find that that words with high frequency words, okay, जो words हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो उनकी एक पूरी लिस्ट वहाँ पर होती है, and we can use those words we must learn those words, and they must be the part of your semantics and vocabulary. They will help you. फिर उसमें कुछ साथी क्या करते हैं कि वो जो वर्ड्स अगर मूवीज़ वगैरह के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी वो एरियाज़ भी होंगे जो वर्ड्स इनफॉर्मल होते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जो हमें वर्ड्स जो है यूज़ करने हैं, क्योंकि एजुकेशन के अंदर एकेडमिक साइड पे हमें फॉर्मल वर्ड्स का चुनाव करना होता है। तो ये जो फॉर्मल वर्ड्स की एक लिस्ट है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के एंड में दी गई है, अगर आप इसको थोड़ा एक नज़र देख लेंगे तो एटलीस्ट आपको उन बुनियादी वर्ड्स का पता होगा जो आपकी लैंग्वेज में आपको हेल्प करते हैं या हमारे लिए बुनियादी ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ मेरी नज़र में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सेमेंटिक्स के साथ देन सेकंड थिंग दैट कम्स टू प्रोनाउंसिएशन एंड रिमेंबर, ओके, आप देखें कराची हैदराबाद के स्टूडेंट से जब आप बात करते हैं कि वो क्रिएटिव कितने हैं, ये एक अलग डिस्कशन है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि उनकी जो लैंग्वेज के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो बेहतर होते हैं उसके निस्बत जो हमारी दूसरी एरियाज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम है कि उनके कम्युनिकेशन के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ उनके एक्सेंट के प्रॉब्लम होते हैं। तो वो जब अपनी इस जो उसकी मदर टंग एक्सेंट में जब अंग्रेज़ी में बात कर रहे होते हैं तो उनको अक्सर इग्नोर किया जाता है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक्सेंट मैटर करता है इंसान की अपनी जो है ना वो जो उसका जहनी सलाहियत है वो एक अलहदा बहस है, एक अलहदा चीज़ है, लेकिन चूँकि हम एक कॉस्मेटिक सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे सिर्फ शो ऑफ को ज़्यादा जो है ना वो तरजीह दी जाती है। लेकिन तो इसलिए मेरा ये कहना है या मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाहता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो मैंने आपको चंद कुछ बेसिक्स साउंड्स बताए, अगर आप इन पे थोड़ी मेहनत करें तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सेंट है वो चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से ए, औ, फे, खे, ठी, छे, आ, से, are we say faithless, are we say development, are we say that there was another sound like wicked, like interested, okay. So with the help of these sounds, okay, with the help of these sounds we can just use that, means you could improve your accent, okay, your pronunciation, okay. So for this up to this second point we have covered this that after this pronunciation that semantics, पहली चीज़ आप अपनी वोकैब को इंक्रीज करें, ठीक है, और दूसरा जो काम है वो आपने अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है ताकि कहीं भी आप जब बोलने जाएं तो आपके लैंग्वेज के अंदर वो खूबसूरती हो और सुनने वाले को लगे कि यस यू आर फ्रॉम ए गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, तो उसमें आपको ज़बरदस्त जो है ना वो कंसिडरेशन मिल जाती है। देन देयर कम्स द थर्ड थिंग दैट इज़ द सेंटेक्स, ओके। सेंटेक्स क्या होती है कि सेंटेक्स से मेरी मुराद ये है कि जो हम grammatical rules पढ़ते हैं that would fall into the category of a syntax, okay, and that is the third point of view. अब जितना भी हम लैंग्वेज के अंदर ग्रामर साइड को कंट्रोल कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं that would fall into the category of a semantics, okay. तो मेरा ये कहना है कि we can go through these three way process, okay. ये तकरीबन इन तीन चीज़ों का अगर आप ख्याल करें तो आप जो है वो अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो चेंज पाएंगे।
पहली बात ये कि आप जो है ना वो सिमेंटिक्स को इम्प्रूव करें, उसके बाद अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करें। प्रोनाउंसिएशन के बाद जो है आप जो है थर्ड जो एरिया है वो सिंटेक्स है। अब सिंटेक्स में हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे दे आर कनेक्टेड विद द ग्रामर रूल्स ग्रामर, और उसी को उसके जो बेसिक्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे सिंटेक्स में। तो अब हम इस कोर्स के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आप इसको समझते हैं कि हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके, अब करना क्या है हमने, अब पहला हमने 3 काम करने, एक तो हमने सेमेंटिक्स बढ़ानी है। अब ये जितने भी वर्ड्स इस कोर्स के थ्रू मैं यूज़ कर रहा हूँ आपने उनको सीखना है, समझना है, और हम डिफरेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे या वीडियोस को एनालाइज करेंगे या किसी पिक्चर या उस पर लिखेंगे, तो उसमें हम क्या कर रहे होंगे, वी विल बी यूजिंग दिस सेमेंटिक्स। ओके, तो पहला काम हमने ये करना है कि वी हैव टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। ओके, आपके वर्ड्स आपके वोकैब को इम्प्रूव करना है। फॉर दैट इट्स वेरी नेसेसरी कि हम अपनी जो है ना उस वोकैब सेशन को इम्प्रूव करें, और जब हम ये वर्ड्स पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली हम इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं। जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो यू मस्ट बी फोकस्ड ऑन देयर प्रोनाउंसिएशंस, हाउ डू वी प्रोनाउंस देम। ओके, देयर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, कि उसको हम बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से जो ना हम उनको प्रोनाउंस करेंगे। तो आपकी इस सेशंस के दौरान वो कैब बढ़ रही होगी, और उसके साथ साथ जो तलफ़्फ़ुज़ जो हम वर्ड्स जो हैं तो उनको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि इस साउंड को आप इस तरीके से प्रोनाउंस करें, हमारी जो है ना वो साउंड्स बढ़ रहे होंगे, उसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो इम्प्रूव हो रही होगी। और जो तीसरी चीज़ हम कर रहे होंगे दैट विल बी सेंटिक्स। ओके, सेंटिक्स क्या है कि हम ग्रामर को भी साथ साथ कवर कर रहे होंगे, जहाँ पे जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, लेकिन ग्रामर को हम एज ए जिस तरह देखें ना, अब ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ाया जाता था और फंक्शनल ग्रामर। ओके, अब दुनिया आस्ता आस्ता उस ट्रेडिशनल ग्रामर से निकल चुकी है और निकल रही है, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस what we call functional grammar. Okay, and when we are moving towards a functional grammar, so we would cover also that, or फिर whatever these components we would learn, okay, from this language. Okay, तो हम उनको अलहदा जिस तरीके से आमतौर पे क्लासरूम के अंदर ग्रामर पढ़ाई जाती है, we will not go to that way, but we would rather go to this direct method एंड डायरेक्ट प्रोसीजर्स। ओके, और हम उसी लैंग्वेज के अंदर उस ग्रामर को हम डिस्कस कर रहे होंगे, सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस ग्रामर इज गोइंग टू वर्क। ओके, सेपरेटिंग देम इज नॉट ए सोल्यूशन। ओके, आमतौर पे क्लास में ग्रामर के अलहदा जो है ना वो सेशन रख दिया जाता है, वहाँ पे सिर्फ नाउन को पढ़ा जाता है, और जब हम सबक पढ़ रहे थे लास्ट समन ऑफ होली प्रॉफिट, तो वहाँ हम ये नहीं डिस्कस कर रहे थे कि इसमें नाउन कौन सा है, उसमें ये नहीं कह समझते कि लास्ट क्या है, हम ये नहीं समझते कि समन क्या है, नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। उसका मसला ये होता है कि हमारी जो टीचिंग है, जिसको हम कहते हैं थियरी एंड प्रैक्टिस, होके वो बिल्कुल एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है, और यही कारण है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वैसे नाउन की डेफिनेशन तो बता देते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में कहा जाए कि इसमें फाइंड आउट करें वेज ए नाउन, वेज ए वर्ब, वेज एडजेक्टिव, देन दे फॉल फ्लैट। ओके, तो इस तरीके से वी कुड okay, and then these 3 things will go together in order to develop your language skills. So I hope so that these things will be helpful for you, and they will also help to improve your skills. Okay, यहाँ पे एक बात और भी मैं बता दूँ कि मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, और मेरा ज़्यादा टारगेट है कि जो ज़्यादा बेसिक हमारे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको गाइड करके और आस्ता आस्ता उनको थोड़ी बेसिक बिल्डअप करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं आस्ता आस्ता सिंपल से एडवांस्ड लेवल्स की तरफ या स्टेजेस की तरफ जाऊंगा, ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को और मैक्सिमम साथियों को इससे जो है वो हेल्प आउट कर सकें। सो थ्रू दिस प्रोसेस इंशाल्लाह वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो दीज 3 एसेंशियल्स, आज जो हमारा ज़्यादा फोकस रहा था वो 3 एसेंशियल्स पे रहा था। व्हाट आर द 3 बेसिक एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज? तो फर्स्ट हमने कहा था कि सेमेंटिक्स, वोकैबुलरी हम इकट्ठी करेंगे, बट वी आर नॉट हेयर फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल वर्ड्स, वी आर फोकस्ड ऑन दैट जस्ट वर्ड्स यूज्ड इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। ओके, एंड जो सेकंड चीज़ हमने बात की थी कि वी विल टॉक अबाउट दिस विल बी पर्टिकुलर दैट phonetics, okay, the way we pronounce words, okay, and the third thing which is very important is like सेमेंटिक्स, सॉरी सेंटिक्स, ग्रामर। तो इन 3 चीज़ों को हम साथ साथ जो है ना वो पढ़ते जाएंगे,
और इनको साथ साथ जो है ना वो डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, अब हम जो है ना वो थर्ड सेशन जो है ना के जाएंगे, जो आज का हमारा है उसमें ये है कि एजे होप्स, ही इज़ very good teacher, and he has a website, okay, effortless.english.com, जिस पे वो जो है ना वो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ाता है। उसने 7 सीक्रेट्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज जो उसके बड़े बड़े जो है ना वो बेहतरीन जो है ना वो मुझे लगते हैं कि हर स्टूडेंट्स को इन 7 सीक्रेट्स से मानूस होना चाहिए। वो कहता है कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए इन 7 सीक्रेट्स का जो है ना ख्याल रखना चाहिए। तो टुडे वी विल आल्सो इंक्लूड दोज 7 सीक्रेट्स, and we would try to understand इन 7 राज को समझेंगे, ताकि अभी हम भी अंग्रेज़ी सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू में अगर हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी चीज़ जब हम कर रहे होते हैं तो वो अगर हम किसी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन आप उसको इंजॉय करेंगे। दैट विल नॉट बी अ बोरिंग, ओके, but this will be we will enjoy this process, okay. So I think that we will talk about this entire language course, okay. There are some questions, okay. Yes, functional grammar, that how grammar functions in the language, okay, that's very important. क्योंकि शुरू में जो ट्रेडिशनल ग्रामर जो था, लैटिन ग्रामर का था, जो उसके गर्दान और ये वो चीज़ें जो ना वो पढ़ाई जाती थी, तो इस तरीके से फिर उसके टेंसेस और इस तरह की चीज़ें, ये जो मैंने कल आपको स्ट्रक्चर जो मेथड ऑफ टीचिंग था उसमें मैंने आपको बताया था, तो उसमें जो इन चीज़ों को ज़्यादा जो है ना वो फोकस किया जाता था ओल्ड पैडागोजी के अंदर। लेकिन अब जो है ना हम ग्रामर को ग्रामर किस तरह फंक्शन करता है लैंग्वेज के अंदर, उसकी 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 एप्लीकेशंस क्या है, वो यूज़ कैसे होता है और उसका लैंग्वेज में फ़ायदा क्या होता है, क्या वो मतलब उससे जो ना हम जो ना वहाँ पे लैंग्वेज में डिफरेंस कैसे, उसके मीनिंग में, उसकी सेटिंग में, उसके कंटेक्स्ट में वो फ़र्क कैसे लाता है, हम उसकी तरफ चले गए। तो फंक्शनल ग्रामर का जो ना दौर चल रहा है, वी आर बियॉन्ड दिस सिंपल जो ना ट्रेडिशनल ग्रामर जो आपने वहाँ बैठकर जो ना क्लास में अलहदा पढ़ लिया था और उसको लैंग्वेज में हमें फिर जो ना बेनिफिट नहीं हुआ। सो थैंक यू वेरी मच। लेट अस मूव टू दिस 7 सीक्रेट ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, बाय एजे होप्स, ओके। These are 7 secrets of A.J. Hopes, okay, and he believes that there must be 7, okay. इसका पहला जो सीक्रेट है, that's always study learn phrases not individual words, okay. वही चीज़ जो मैंने आपको कही थी semantics में कि अकेले वर्ड्स मत याद करो, छोटी छोटी phrases याद करो। What are these phrases? I am here, he's my father, my house is new, I am happy, where are you going, give me water। छोटी छोटे सेंटेंस, छोटी छोटी phrases से ये कहता है कि आप लैंग्वेज की शुरुआत करें और आप उससे उसको जो है इस्तेमाल करें। तो लेट अस लिसन दिस फर्स्ट रूल एंड देन वी विल एंजॉय दिस फर्स्ट रूल। Hi, I'm AJ Hogue, and welcome to the first secret or the first rule for excellent English speaking. Now, this whole video course is going to teach you a very, very different way of learning English. And if you follow every one of these secrets or rules, I promise you, your English speaking will improve tremendously, a lot. You will make big improvements, and I also promise you, you will enjoy learning English better, you'll enjoy speaking it more, you'll feel more confident. All of these things will happen. So let's get started. What is secret number 1? Well, secret number 1 is always study and learn phrases, not individual words. Alright, so what's a phrase? A phrase is simply a group of words. Doesn't need to be a full sentence, although that's fine, but it's a group of words, more than one word. That's a phrase. So this is a very, very simple rule, simple secret, but extremely powerful. In fact, this is one of the keys to learning and mastering English grammar when you speak. And it's much better than studying grammar textbooks.
Okay, so in your traditional English classes, schools, and books, in your normal book classes that you took before, the normal books that you used before, how did you learn? Well, when you learned vocabulary, you had long vocabulary lists, right? Usually at the back of the chapter, there's a list, and you see the word, and then maybe a translation of the meaning in your own language. And you just studied these lists of words and memorized them, tried to memorize them for tests. And then probably you forgot most of them. That's what usually happens. So, this is a very painful and boring method, right? I mean, nobody likes studying lists of vocabulary words. Good news for you. Stop doing it. It doesn't work. You don't need to do it anymore. So, what you do need to do is focus on natural, real English phrases. When you do this, you get free grammar. Let me give you a very simple example. So simple. John hates ice cream. Now, of course, to hate means to dislike, to not like something very strongly. Now look at this, okay, first rule, okay. Always study and learn phrases, not individual words, okay. It is a simple but extremely very powerful tool. ये बिल्कुल एक सादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है लैंग्वेज सीखने का. इन अ ट्रेडिशनल स्कूल, ट्रेडिशनल मीन्स जो हमारी रवायती स्कूल्स हैं जहाँ पे हम पढ़ते हैं, वी लर्न इंडिविजुअल वर्ड्स. वहाँ पे क्या होता है, हमें अकेला वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं. वी मेमोराइज देम. मेमोराइज होता है याद करना. क्रैम होता है याद करना, जो आप रटा लगाते हैं, हम याद करते हैं. वी मेमोराइज दैट, बट दिस मेथड इज पेनफुल एंड बोरिंग. ओके, ये जो तरीक़ेकार है बहुत ज़्यादा बोरिंग है, पेनफुल है, और ये इतना अच्छा नहीं है. इट डजेंट वर्क. और मज़े वाली बात है, ये काम भी नहीं करता. लैंग्वेज लर्निंग में ये इतना फ़ायदेमंद प्रोसीजर नहीं है. डोंट क्रैम वोकैबुलरी लिस्ट. अब वहाँ पे स्कूल में क्या होता है, एक आपको वर्ड्स की लिस्ट दी जाती है और आपको कहा जाता है आप उसको याद करो. डोंट क्रैम दिस वोकैबुलरी लिस्ट. ओके, इस वोकैबुलरी लिस्ट को मत क्रैम करो, बिकॉज यू वुड फॉरगेट इट सून. और जिस तरह मैंने कहा, आप इसको जल्दी भूल जाओगे. क्या है, आप जो 10 वर्ड्स नहीं याद करोगे, 3 महीने जो 10 वर्ड्स याद किए थे वो भूल जाओगे. यू वुड फॉरगेट. अब देखिए यहाँ पे मैं फॉरगेट नहीं पढ़ रहा हूँ, याद रखें वो रूल ना. फॉरगेट इज सून. आप जल्दी इसको भूल जाओगे. फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज है क्या, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कोई छोटा सा मतलब हो, छोटे छोटे. यूजिंग शॉर्ट फ्रेजेस इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल मेथड. छोटी छोटी फ्रेजेस इस्तेमाल करना, यूजिंग शॉर्ट फ्रेजेस इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल मेथड. पावरफुल, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन जो है ना वो मेथड है. ग्रामर टेक्स्ट बुक डजेंट वर्क. और फिर आपको ग्रामर की किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनके रूल्स याद करवाए जाते हैं. ओके, यहाँ इज़ लगाओ, यहाँ पे एम लगाओ, यहाँ पे आ लगाओ. इससे इसका लॉस ये होता है कि पहले दिन से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इज़ लगाऊँ, एम लगाऊँ, आ लगाऊँ. इसके बदले में हम क्या करते हैं कि वी अलाउ स्टूडेंट्स, वी एक्सपोज स्टूडेंट्स टू लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट. हम लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में उसको इन्वॉल्व करते हैं और ही स्टार्ट्स यूजिंग दैट लैंग्वेज. वो उसे यूज़ करता है, उसमें उससे गलतियाँ होती हैं और आस्ता आस्ता वो खुद ब खुद उस प्रोसेस से वो चीज़ें गलतियाँ ठीक करता है. जब वो मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहता हूँ कि आई आर स्टूडेंट्स, लेकिन जब मैं दूसरों को सुनता हूँ, दे कह रहे हैं कि आई एम स्टूडेंट, तो वो जो मेरा आ है वो एम खुद ब खुद उस प्रोसेस में रिफाइन होता है. एंड दैट इज़ वेरी वंडरफुल वे. ओके, एंड इसमें बच्चों में को ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं किया जाता है. तो उनको जब डिस्टर्बेंस कम होती है तो उनकी लर्निंग प्रोसेस फास्ट होता है, वो इन्वॉल्व होते हैं. क्वेश्चन इज इन्वॉल्वमेंट. ओके, याद रखें, आप जितना लैंग्वेज में इन्वॉल्व होंगे उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी. एंड अगर आप बाहर बैठकर ये सोच रहे हैं कि इज़ लगाऊं, एम लगाऊं, आ लगाऊं, तो देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल. ओके, so using short phrase is an extremely powerful method. Grammar textbook doesn't work. Don't translate these words in your language. Learn natural phrases. Okay, जो नेचुरल फ्रेजेस है आप उनको लर्न करें और उसमें ज़्यादा तौर पे जो है आप जो है. सो द फर्स्ट रूल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज is that, okay, the first secret is that always study and learn phrases, not individual words. Okay, let us go to this second rule of learning language. Okay, the second rule says that never again study. Hi, this is AJ, and it's time for secret
or rule number 2 for excellent English speaking. Now this one I think is going to be your favorite. I think this is going to be your favorite secret because most of our subscribers, most of our students tell us this is the one they love, that they loved hearing this, that it set them free. So what is it? What is secret number 2? Secret number 2 is this: never again study grammar rules. Woohoo! You're finished with grammar. No more. Never study grammar rules. Now, I know this may be a big surprise. This is a surprise for a lot of people, for a lot of our students, a lot of our subscribers, a lot of our members. When they first hear this rule, they're shocked, they're surprised, and they think, well, is that true? Could that be possible? Maybe you're feeling a little unsure about this particular secret or rule. Well, that's natural. The reason it seems shocking or surprising is that all your life that you have been learning English, your teachers have been telling you, study grammar, study grammar, study grammar. Grammar is the secret. Grammar is the secret to English. Grammar, 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 grammar. I don't know exactly when you started studying English. Maybe in elementary school when you were young. Maybe in middle school or high school when you were a bit older. Maybe later than that. But I'm sure that in school, your teachers told you grammar was the key. Grammar was super important. You had to study all these grammar rules. You had to know the past and the past perfect and the present perfect and the present progressive and the future perfect progressive. You had to know what all of that stuff was and how to do all of the changes to the verbs. And you had to know possessives, of course. And then there were all the prepositions, endless grammar. You had to memorize all of these rules. And probably most of your English classes were focused on these grammar rules. And then taking tests about these grammar rules. It doesn't work. Stop doing it. You're finished. In our system, no grammar rules study. Now some people, when they hear this, they think, no, that's not right. And they don't believe me. So I have only one question for you. You have been learning these grammar rules for years and years and years. My simple question is, did it work? Can you now speak English easily, quickly, and automatically? Is your grammar correct when you speak? Or do you still make mistakes with simple grammar like the past tense? I mean, if you're a fantastic, amazing English speaker, probably you don't need to watch this video. But I'm guessing if you're watching this, it means you're not a great English speaker. You do not have excellent English speaking. And yet you know so much grammar. I guarantee you know more grammar than I do. Because I don't think about this stuff when I speak English. I just use it automatically. Now look at that, okay. The second point is very important regarding never study grammar rule, okay. That is a very interesting rule in language teaching. Look at that, when you say the rule is interesting, full of surprise. People are shocked and surprised when you ask them that never study grammar rule, okay. यहाँ पे एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, बहुत से लोग ये बड़ी गलत फहमी है कि मेरा मतलब समझते हैं कि मैं कहता हूँ आप ग्रामर को छोड़ दें. मैं कहता हूँ ग्रामर को नहीं, ग्रामर रूल्स के पीछे जो हमने स्टूडेंट्स को परेशान कर रखा हुआ है वो. ग्रामर है क्या? ग्रामर लैंग्वेज की खूबसूरती है, लैंग्वेज की खूबसूरती है. लेकिन देखें, पहले कोई भी इमारत बनती है ना, उसका फाउंडेशन बनाया जाता है. फाउंडेशन जब बनकर तैयार होता है उसके बाद ये तय किया जाता है कि घड़ियाल कहाँ लगेगा, सीनरी कहाँ लगेगी.
हम क्या करते हैं कि पहले दिन में बिल्डिंग का नाम और निशान नहीं होता और हम बच्चे को बता रहे होते कि सीनरी यहाँ लगानी है, घड़ियाल यहाँ लगाना है, वो बेचारा बैठकर परेशान हो रहा होता है कि हो क्या रहा है। फाउंडेशन फेज, मैंने आपको 3 फेज बताए थे लैंग्वेज सीखने के, फाउंडेशन, करेक्टनेस, ग्रेटनेस। फाउंडेशन फेज पे आप स्टूडेंट्स को, बच्चों को ग्रामर की उलझन में मत डालो, उसको लैंग्वेज एक्सपोजर दो, उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू उसमें इन्वॉल्व करो, ऑटोमेटिकली उसकी ग्रामर इन्वॉल्व होती चली जाएगी। और फिर जब वो एक स्टेज, जब उस फाउंडेशन स्टेज उसका बन चुका होगा, वहाँ पे फिर आप जब उसकी लैंग्वेज को एनालाइज करोगे तो जो जो उसके ग्रामेटिकल इश्यूज होंगे वो वहाँ पे उसके रेक्टिफाई करवाए जाते हैं। दैट्स वेरी साइंटिफिक एंड वेरी अथेंटिक एंड वेरी यूजफुल वे। और इसमें क्या है, बच्चे को डिस्टर्बेंस कम होती है तो उसका लर्निंग जो स्पीड है वो बड़ी तेज़ होती है। उस स्पीड का फ़ायदा ये होता है कि वो 70-80% ग्रामर रूल्स ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस के थ्रू गेन कर चुका होता है। So the rule is interesting. Okay, this say that never again grammar rules. Okay, people are shocked and surprised. Okay, लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे, they doubt this rule, वो शक करते हैं, because they have been informed by their teachers, क्योंकि उनको बचपन से उनके टीचर्स से या उनके सिस्टम से यही बताया गया होता है थ्रू द होल कोर्स ऑफ देयर स्टडीज़। उनका पूरा जो पढ़ाई का दौरानिया है उनको यही बताया सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है कि लर्न ग्रामर, उन्हें कहा जाता है बस ग्रामर सीखो। दे वर इन्फॉर्म दैट ग्रामर वॉज द की टू लर्निंग इंग्लिश, उन्हें बताया जाता है कि ग्रामर ही की है लैंग्वेज सीखने की। ग्रामर वॉज इम्पॉर्टेंट, नहीं सुपर इम्पॉर्टेंट, उन्हें ये बताया जाता है कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है, नहीं 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 वो तो सुपर इम्पॉर्टेंट है। सो दे मेमोराइज दीज रूल्स। ओके, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इन रूल्स को मेमोराइज करते हैं, बट इट डजंट वर्क। ओके, एक्चुअली ये मेथड साइंटिफिक नहीं है। स्टॉप डूइंग दिस। ओके, यू हैव बीन लर्निंग ग्रामर फॉर ईयर्स, आप सालों तक ये पढ़ते रहे, फॉर years. Are you able to speak easily, automatically and fluently? तो क्या आज आप आसानी के साथ बोलने के काबिल हैं? The simple answer is no. जवाब क्या है कि नहीं, हम जो है ना वो नहीं बोल सकते। So as far as these 2 rules were concerned, what we covered today, okay, it was we will move further with other secrets, okay, but these 2 secrets, okay, what we cover, that learn individual words, don't learn individual words, but go with the short phrases and short sentences in your practice, okay. And the second is that never study grammar rules, okay. Just don't worry about these grammar rules, okay. They will be used and you will learn through this foundation process, and automatically these rules, they would come to you. But if you will think about rules when you are writing and speaking every time, then your brain will be preoccupied with the idea of these grammar rules. You will not be just having deliberation or certain proactive actions on your part. आप कोई अपने तरफ से पेशरफ्त नहीं कर रहे होंगे सिर्फ ग्रामर रूल के खौफ की वजह से। उससे क्या होगा, दैट यू वुड रिमेन कन्फाइंड एंड लिमिटेड, एंड योर लैंग्वेज एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस वुड नॉट बी हैविंग दैट मच एनवायरनमेंट वेयर यू could groom or you could develop your skills, okay. So from that system, I personally believe that you could improve your skill, okay. So today's class we highly focused that what should be the essentials of this language, और उसमें हमने कहा कि there must be 3 essentials. We focus on semantics and we must focus on phonetics. semantics से मुराद है कि हम अपनी vocab को बढ़ाएं, लेकिन अकेले वर्ड नहीं, phrases के छोटे छोटे uses के सेंस में। Second point was that we must improve our pronunciation. That's very important, okay, and that's really important because when you go and you communicate to people, your accent and your way of speaking should be up to the standard. And the third thing is the semantics, what we have entered grammar, and we would go we would take these 3 areas onward, okay. आगे भी हम इन तीनों को साथ लेकर चल रहे होंगे। अब जब हम सेमेंटिक्स को कवर करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उसमें कोई ना कोई वोकैब होगी, तो हम सेमेंटिक्स को कवर करेंगे, और दूसरी तरफ हमारी वहाँ पे साथ साथ में उन्हीं वर्ड्स को जब हम प्रोनाउंस कर रहे होंगे तो साथ साथ हमारी फोनेटिक्स भी कवर होती जाएगी, और ग्रामर को भी साथ साथ इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू हम जो है डिस्कस करते रहेंगे, विद इन एक्टिविटीज़, नॉट आउट ऑफ एक्टिविटीज़, ओके, सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस ग्रामर इज गोइंग टू वर्क आउट, ओके. So thank you very much, okay, for joining this third session, and I hope that you must have enjoyed this session, and whatever the comments and whatever the questions you have posed, okay, I would read it, and in the next session I would deal with your questions.
and comments thereof. Apart from that, if you have any other suggestions regarding this, that you may, and I will try my level best to incorporate those suggestions in my class so that we could make it a wonderful session. And as I have already mentioned, that our prime job is that to help and share this to majority of fellows, friends, students. So kindly suggest and share with your fellows, and give them this opportunity to learn. And my prayers are with you. And COVID-19 is outside, so you need to focus it, your academic side, your learning. Use this time positively and properly. This is a challenge for us all, but I hope that this type of natural disasters cannot threat our existence, okay? Because when you claim to be intellectual being, that is the worth of your being as an intellectual, that we must transcend beyond the limits, and we could encounter these means and the matter the nature is going to confine us. It is okay, we are confined within home given to this circumstances of COVID-19, but it doesn't mean that our education and academic system would suffer. So love you all, thank you very much, see you on Tuesday. मैं हर दूसरे दिन ये क्लास जो है ना वो कंडक्ट करता हूँ, तो अब हमारा जो दूसरा जो सेशन होगा वो ट्यूसडे पे होगा 4 से 5:30 के दौरान. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, बाय.